नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 9 फरवरी 2023 बृहस्पतिवार है। हम हर रोज़ की तरह आज भी निफ्टी में कल का और अगले कुछ दिनों का क्या रुख हो सकता है उसकी बात करेंगे। आज हम वीडियो पर बात नहीं करेंगे, आज चार्ट को लेकर हम सारे वार्तालाप को करेंगे, क्योंकि आज चार्ट्स को देखने से कुछ बातें समझ में आएगी। यह निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट है और ये डेली चार्ट है, यानी हर एक कैंडल एक दिन का प्रतीक है। ये अंतिम कैंडल जो है ये आज की प्राइस एक्शन है, आज का ये रुख था। ये मोमेंटम इंडिकेटर है जो थोड़ा स्लो है। ये एक दूसरा मोमेंटम इंडिकेटर जो फास्ट है, यानी कि ये कोई चीज़ होती है उसके पहले ही ये बताने लगता है कि ऐसा होगा। अब ये हमारी समझ पर है कि हम उसको माने, कितना माने या ना माने, पर ये एक एडवांस इंफॉर्मेशन देता है। आप भी समझते हैं कि एडवांस इंफॉर्मेशन हर बार सही नहीं होता है, ये अपनी जगह जो करता है सो करता है। ये ब्लू लाइन जो है ये 0 लैग मूविंग एवरेज है। जब ये मूविंग एवरेज नीचे जा रही है तो बाज़ार में मंदी का रुख है, ऊपर जाती है जैसे यहाँ जा रही थी तो बाज़ार में तेज़ी है। सबसे पहले इस मूविंग एवरेज को देखते हैं जो एक कप का पैटर्न बनाकर अब ऊपर की तरफ घूमा है। 2 दिन हो गए ये ऊपर की तरफ घूम चुका है, कल भी था और आज भी। बहुत ज़्यादा इस पैटर्न पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि हर पैटर्न का है ना एक दूसरा चेहरा भी होता है। ये देखिए, अब ये यहाँ भी ये मूविंग एवरेज कप बनाकर ऊपर की तरफ घूमा था और फिर वापस नीचे आ गया। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चूंकि ये कप बनाकर घूमा है तो इसको वही करना होगा जो हम सोच रहे हैं कि ये बाज़ार को ऊपर ले जाएगा। मूविंग एवरेज ये बताता है कि आज क्या रुख है, वो ये नहीं बताता है कि कल का रुख क्या होगा। ये हम कई बार इसकी बहुत बड़ी भूल करते हैं। मूविंग एवरेज ऐसा कह रहा है, वो कह रहा है कि आज ऐसा है, वो भविष्य नहीं बता रहा है। सच तो ये है कि कोई भी भविष्य नहीं बता सकता, पर मूविंग एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं बताता है। वो सिर्फ बताता है कि आज की स्थिति क्या है। उससे भी बहुत फायदा होता है, लाभ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका अर्थ नहीं होता है। मैं तो 0 लैग मूविंग एवरेजेस का बहुत प्रयोग करता हूँ, पर यह बात समझनी चाहिए कि ये कल को नहीं दर्शा रहा है, ये सिर्फ आज की स्थिति बताता है। कुल मिलाकर मूविंग एवरेज ऊपर है। ये जो स्लो मोमेंटम का इंडिकेटर है ये देखिए आप, ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और अब 0 के आसपास हो गया है। 0 पर कई बार इनडिसीजन हो जाता है, जैसे यहाँ आपने देखा, और इनडिसीजन के बाद यानी कि ये थोड़ा सा है ना मार्केट तय करता है कि क्या मुझे बढ़िया अप ट्रेंड में जाना है या वापस नीचे आना है। उसके बाद तय करने के बाद उसका अगला मूव आता है। ये कई बार ऐसा होता है। हमारा फास्ट मूविंग इंडिकेटर नीचे जा रहा है, कल नीचे था और आज फिर नीचे है। तो हमारा जो एडवांस का जो मोमेंटम है वो बता रहा है कि बाज़ार में तेज़ी नहीं है। अब कितनी सुस्ती है ये तो बाज़ार ही बताता है, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है या तेज़ी नहीं है वो ये बता रहा है, ये कह रहा है। आप ध्यान दे, आप समझ रहे हैं कि इन इंडिकेटर्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भविष्य की बात सही बता सके। ये सब बताते हैं इनकी क्या समझ है वही। अब हम प्राइस एक्शन को देखते हैं। 17,300 का लो बना, 350 का लो बना, फिर ये 17,650 का लो बना और अब 2 दिनों से 17,740 का लो बन रहा है। इसका मतलब है हम हायर लोज देख रहे हैं, एक के बाद एक लोज ऊपर जाते जा रहे हैं। ये बुलिश साइन है। जब बाजार है ना लोज को नहीं तोड़ता है और नया लो ऊपर की तरफ बनाता है, इसका मतलब है खरीदार तैयार है, वो इसके नीचे नहीं जाने देना चाहते। पर उसके साथ है ना असली बुलिशनेस तब आती है जब बाजार में हायर हाइज भी बन रहे हो। ये हम फ्लैट है, ये 17,700, ये कि ये सब 17,800 था, पर बाजार ने थोड़ा सा अपना रुख ऊपर करके इस रेजिस्टेंस को 17,900 पर ले लिया है। पर ये अभी भी ट्रेडिंग रेंज है। ये 17,900, 17,900, 17,900, 17,900, ये लगभग 17,900। तो हम 17,900 को तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये तो ठीक है कि हम हायर लोस बना रहे हैं, पर हाइज में हम है ना जा नहीं सक रहे हैं। जो हाइज बन चुके हैं वहीं जाके रुक रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये विश्लेषण तो मैंने कर दिया, विश्लेषण से कुछ होता नहीं है। हमको ट्रेडेबल आइडियाज़ चाहिए, हमको वो विचार चाहिए कि अब क्या करना है। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि 17,740 मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है। इसके नीचे बाजार जाएगा तो कुल मिलाकर 2 दिन के लो को तोड़ रहा है और वो कोई बहुत अच्छा जो तक नहीं है, साइन नहीं है। तो बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखनी है। लेकिन
मैं 17,900 से 17,740 के लिए वेट नहीं कर सकता। ऑप्शंस की पोजीशंस होती है, वो यहाँ से यहाँ आते आते उसमें काफ़ी नुकसान लग सकता है। अगर बाजार 17,900 से ऊपर जाने लगता है तो बहुत अच्छी बात है, चुपचाप बैठे रहो, जहाँ जाता है जाने दीजिए। हो सकता है कल 20 अंक, जैसे ये रोता रोता ऊपर जा रहा है, 20-30 अंक लेके ऊपर चला जाए, दिन भर चौपी रहे और 20 अंक लेके ऊपर चला जाए। हो सकता है ये नीचे ही आए लेकिन इस लेवल को ना तोड़े। अब बाजार है, कुछ भी कर सकता है, पर इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है जब तक हम 17,900 को धड़ाके से न तोड़ दें तब तक ये बाजार कोई बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा। अब ऐसा संकेत दे नहीं रहा है। तो कल लॉन्ग पोजीशंस है, उसको काटने का कोई कारण नहीं है। लॉन्ग पोजीशंस को काटने का, अगर बाजार में कोई भी मंदी आती है तो मैं पोजीशंस कम कर लूँगा, ऑप्शन स्प्रेड्स को टाइट कर दूंगा। लेकिन जब तक ये नहीं समझ में आया कि ये लेवल टूट रहा है तब तक हम कम से कम शॉर्ट तो नहीं लेंगे। अपने पोजीशंस को कैसे मैनेज करेंगे ये कल के बाजार के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। पर बहुत कल कोई, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई लॉन्ग पोजीशंस में कोई बढ़ोतरी भी करूंगा, बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर बाजार थोड़ा सा संशय में आ गया है। अब देखा जाएगा क्या होता है। आप आशा है इन वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, कमेंट्स देते रहिएगा। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is 9th February 2023, Thursday. As usual, we will discuss the view for the Nifty for tomorrow and for the next few days. Today we are not having a video chat, rather I am going to show you the Nifty chart because today's chart should be more interesting, or rather more useful than the video chat for the day. This is the candlestick chart for the Nifty and these are daily bars. So this last candle is today's price bar. This is a slow momentum indicator which primarily gives us the swing trend, a trend that lasts for few days. This is a fast momentum indicator that gives us early warnings. We don't actually use this as a trend, we just use it as an early warning signal. Now let me explain what an early warning is. It is the indicator's own way of telling us that things may be changing. Please don't confuse it with a future forecast. No one can forecast the future, and least of all these indicators. So the indicator simply tells us that according to the calculations built inside it, it is giving us an early warning for a trend change. Now that warning may be correct, it may not be correct, it just gives us an additional input to analyze. This blue line, or rather the cyan line, is the low lag moving average. It's very simple to understand. When the average is going up, the trend is up. When the average is coming down, the trend is down. Now, as you can see, the average was coming down and then it made a cup-like pattern, and then it has started going up. Now let's not get excited about this cup-like pattern. Nothing is 100% guaranteed. In trading, nothing is guaranteed at all. Forget about 100% or 50%, nothing. Now this cup-like pattern looks so attractive, but let's go back here, and the moving average had made a similar cup-like pattern, and then it turned down and the prices turned down. So the cup-like pattern, although it sounds very nice, is not an assurance or guarantee that the market is going up. It's exactly what it says. It's a cup-like pattern. That's all. Please don't confuse it with a future forecast. I'm simply saying it because we sometimes latch on to some idea and say, this is it. If this says this happens, it's going to happen. No. First of all, nothing says anything about the future, and even if some tool says that it can forecast the future, it won't happen like that. Anyway, now I'll explain something else about the moving average. The moving average tells us what the situation of the market is, or the situation of the instrument is today. For example, if it is rising, it is telling us that as on date, the trend is rising. The trend is up because it has just started rising. So the trend has changed from down to up. It doesn't tell us that because it has changed today, it will continue to rise tomorrow, day after, next day, next day, next day. It doesn't tell us that. Many people, many traders and many people who are not traders but simply analysts, they confuse a moving average with a future forecast. Far from it. If you look at the calculations of a moving average,
If you understand what it does, it tells us the present status of the instrument. What is the trend now? A zero line moving average catches a trend change faster, but it still only tells us what is the trend now. It doesn't tell us this will be the trend tomorrow. So many people get confused. The moving average is saying this. It's saying this about today. It's not telling us anything about tomorrow. And we have to trade tomorrow. We don't have to trade today. So I sometimes make these points to tell you that trading is not as easy as it sounds, and it's certainly easier than most people think. But these tools sometimes can confuse us. We should keep our mind clear. Sometimes we understand what is happening in the market, and many times we don't understand what's happening in the market, and that's fine. We are not supposed to be like the goddess Saraswati and know everything. We are not. So we shouldn't worry about that. Anyway, let's look at the price action now, which is far more relevant. The prices made a low of 17,350. Then they made a low of 17,650, and for the last 2 days they have been maintaining 17,740. So we are having a pattern of higher lows, but we are not having a pattern of higher highs. If we had that also, then we would almost certainly say we are in an uptrend. I would have no confusion in that. Now the sense is that we are in an uptrend, but look at the price action. It goes to 17,009. First it was 17,800. Now that range has expanded mildly to 17,900. Look at the price action. It stops at 17,900 repeatedly. Now we can't say this is a bullish trend. It's not bearish. Don't get confused. We can always break out of 17,900 and go running up. That's possible. But it's not bullish yet. How do we trade then? Because all this is analysis. Analysis is fun. We can go and do it for the whole day. If you watch people on TV, they analyze from morning to night. But analysis does not enable you to trade. So we need a tradable idea from this whole chart. This is a tradable idea. And this is what I am planning to do. My 17,740 level is final. If the Nifty starts going below this, something is going wrong with this whole pattern. Whatever it is, I don't want to be in the market. I don't know whether I will go short or not. This would behave, I take very few short positions anyway. But this will depend on how the market acts tomorrow. I wouldn't be long at all. Around 17,900, if the Nifty is moving up and down as it is doing nowadays for the last 2 days, it attaches itself to some level and then moves up, moves down. I will do nothing. I have option spreads. I will just have to be patient. If the Nifty starts falling and it comes in between this range, I will lighten my positions. I'm not keen to carry long positions if the Nifty is below 17,900. It means we are still in a range and who knows what can happen. So this is my Lakshman Rekha 17,740. The range between 17,900 and 17,740 is a period when I already have long positions and I have to cut them down. Anything above 17,900 means I would be willing to not only keep but also add to my positions. So the short side today will come only below 17,740, and since I cannot predict market action tomorrow, we'll just have to wait and see what happens. I hope this is a little clear. The markets are confusing, therefore it's not as clear as it should be, and that's all right. Sometimes it will happen like that. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.